बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन एंड क्राइम। जैसे अगर आपको सोशलाइजेशन समझना हो तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जो कि सोशलाइजेशन का डिटेल लेक्चर है आप उसमें से समझ सकते हैं, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आपको समझा रहे हैं कि सोशलाइजेशन और क्राइम का आपस में क्या ताल्लुक है। सोशलाइजेशन इज मोर देन जस्ट व्हाट वी लर्न एंड व्हेन वी आर एट स्कूल। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन वो चीज़ है जो उसको हम स्कूल पर सीखते हैं। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ आवर फैमिलीज एंड दोज अराउंड अस इंक्लूडिंग द मीडिया and our peers. Often the idea of the socialization is broken into two categories, primary and secondary socialization. वो ये बताना चाह रहे हैं हमें कि जो सोशलाइजेशन है हम अपने स्कूल से सीखते हैं, हम अपनी फैमिली से सीखते हैं और हम अपने पेयर ग्रुप से सीखते हैं। यानी कि जो हमारे 3 एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, उनसे हम सोशलाइजेशन सीखते हैं, और हम सोशलाइजेशन को प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं। द पॉजिटिविस्ट homogenic idea surrounding primary socialization is that our learning is concentrated from within the family, whereas sociologists assume that secondary socialization marks our transition into adult life, including our education. It is important for a child to have a source of primary socialization in terms of the positivist ideas, as this is when we as a human learn our social moral conduct. We learn what is right and wrong, what is acceptable and unacceptable within society. And for the child to be able to cooperate within the learning of the such forms of socialization. हम क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि हमें हमारी फैमिली ही सिखाती है जो बुनियादी तौर पर क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ हमें बतौर इंसान हमारा जो इखलाकियात है वो कैसा होना चाहिए। हम सही और गलत की पहचान देखते हैं, हम चीज़ों को काबिल कबूल और नाकाबिल कबूल होने की बेसिस पर जज करते हैं, और हमारे चाइल्ड के लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चे ने किसी भी चीज़ को सीखना कैसे है और उसके मुताबिक माशरे में कोऑपरेट कैसे करना है, ताउन कैसे करना है। तो ये तो हो गया सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन के बारे में क्या हो गया, प्राइमरी बुनियादी बात हो गई कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसको हम अपनी सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, और इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन भी होती है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी होती है। द मोस्ट डोमिनेंट वे ऑफ लर्निंग these socially acceptable norms and values is through our communications with others, although there are some boundaries in relation to certain traits and behaviors which could be put down to our biology. These leads on the idea of the nature or our genes being a reason behind how we behave. Our nature, where our behavior is down to the interaction of the other influencing the way we are reared, and then later how we act. The move from childhood to the adulthood has been made problematic due to societal changes. वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो हम कहाँ से सीखते हैं, हमारे जो माशरे के नॉर्म्स हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं, लोग काबिल कबूल चीज़ें होती हैं, हम उनको सीख कर सोशलाइज हो जाते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, हम बातचीत करते हैं। हम अपनी कम्युनिकेशन या बातचीत की बेसिस पर क्या होते हैं, सोशलाइज होते हैं। हमारी जो मुख्तलिफ बिहेवियर होता है जिसमें मुख्तलिफ बाउंड्रीज होती हैं, जिसकी बेसिस पर जो हमारा जो नेचर है वो हमें हमारी जीन्स की बेसिस पर मिलती है। हमारी जो फितरत होती है वो नाकाबिल तब्दील है। फितरत से मुराद क्या है? अगर मेरी फितरत में धोखा देना होगा तो मैं हर किसी को धोखा दूंगी, ये नाकाबिल तब्दील है। जैसे सांप की फितरत है डसना, वो हमेशा डसता है। इसी तरह से इंसान की जो फितरत होती है ना वो उसको उसकी जीन्स की बेसिस पर मिलती है, जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे किसी के ख़ानदान में नशा करना आम होती है तो वो उनकी फितरत होती है कि वो बहाने से नशाई हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी इस तरह की तरबियत हो, इस तरह का माहौल दिया जाए कि वो अपनी जो फितरत है उससे उनको हटाकर एक पॉजिटिविटी की तरफ लाया जाए तो वो भी चेंज हो सकती है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो मसला है ना वो कहाँ है, वो ये है कि एक बच्चा जब
बचपन से आगे जवानी की तरफ जाता है तो उसके जो माशरे में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो चेंजेस होती हैं, वो उसके लिए बहुत मसले मसाइल पैदा कर देती हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन एंड क्राइम। तो हम पहले किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पहले सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और फिर हम इस चीज़ के साथ किसको लिंक करेंगे? हम इसके साथ क्राइम को लिंक करेंगे। और एक अभी तक हमारे इल्म में क्या बात आई? एक हमारे इल्म में बात आई कि हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, एक्सेप्टेबल नॉर्म्स सीखते हैं, हमारी जीन से, हमारी नेचर है, हम उसी की बेसिस पर एक्ट कर रहे होते हैं और हम उसी की बेसिस पर आगे चल रहे होते हैं। बोथ प्राइमरी our family and secondary educations. Socialization can draw upon psychological ideas. For example, Albert Bundra creates the idea of the social learning theory, which focus upon the aspect of the social behavior psychology. Behaviorist psychology draws upon the idea that external stimulus are the reflect of our environment, affect the way we behave. They suggest that we learn our behavior through the ways of the conditioning and observation. वो कहते हैं कि हमारी जो प्राइमरी है फैमिली और सेकेंडरी जो है एजुकेशन। तो प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है वो हम अपने फैमिली से सीखते हैं और सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन है वो हम अपने स्कूल और पेयर ग्रुप से सीखते हैं। दोनों किस चीज़ पर होते हैं? ये हमारी साइकोलॉजी पर होती है, ये हमारी नफ्सियात को बनाती हैं। इसके रिलेटेड हमारे पास क्या है? इसके रिलेटेड हमारे पास अल्बर्ट बुंद्रा थ्योरी है, जिसमें हम सोशल लर्निंग थ्योरी सीखते रहते हैं। और इसमें हम क्या सीखते हैं? हम मुख्तलिफ बिहेवियर के पैटर्न सीखते रहते हैं और हम इससे मुख्तलिफ आइडियाज़ लगाते हैं। वो हमारे इन्वायरमेंट पर शो हो रहा होता है। जो भी बिहेव होता है वो क्या होता है? वो हमारे इन्वायरमेंट पर शो होता है। तो ये क्या हुआ? ये हमारा सोशलाइजेशन का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन से रिलेटेड हमारी अब जो नफ्सियात है उसको जोड़ा जा रहा है। हम आहिस्ता आहिस्ता सोशलाइजेशन और क्राइम को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अब हमारा पहले हमने नेचर को डिस्कस किया और अब हम किस चीज़ को डिस्कस करें? अब हम इंसान की साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग को डिस्कस करें। उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके पास हमारे है अल्बर्ट बुंद्रा थ्योरी। The use of the Bundra's social learning theory can be linked to real life scenario. For example, jam burger case can ever easily be linked in here in relation to the family aspect of both John Venerable and Robert Thompson. Robert's fathers particularly showed a violent disposition and repeatedly beats Robert's mother. This could therefore clarify the idea of the social learning theory, is that through observation, Robert learned these violent traits and therefore thought that it was an acceptable behavior to have. कि एक आदमी है रॉबर्ट, उसका बाप उसकी माँ को मारता है और वो इससे क्या सीखता है? वो सीखता है कि ये काबिल कबूल तरीका है किसी भी माशरे में कि उसको मारना जायज़ है। In relation to the Bundra's theory, Sutherland has also created a theory known as differential associations, which suggests that interaction with other like-minded person leads on having the influence of their behavior and creating a criminal subdeviance through society. Both of these theories can be linked to both the family, primary socialization and secondary education, secondary socialization. दो थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं हम क्राइम और सोशलाइजेशन के आपस के इंटरेक्शन में। जो क्राइम और सोशलाइजेशन है इनका आपस में बड़ा गहरा इंटरेक्शन है। दोनों थ्योरीज की बेसिस पर वो कहते हैं कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है जो कि एक फैमिली से सीखी जाती है, अगर आपकी फैमिली में आपका फादर एग्रेसिव है तो आपका जो ब्रदर होगा वो भी एग्रेशन को सही समझता होगा। अगर आपकी माँ कुट खाती है आपके बाप से और वो उसके खिलाफ एहतजाज नहीं करती तो आप बतौर बेटी भी अपने हस्बैंड से कुट खाने को तैयार रहती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये मर्द का राइट है मारना। इसी तरह से अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि जब कोई टीनेजर होता है, जिस तरह के उसके दोस्त होते हैं, अगर उसके दोस्त लायक पढ़े लिखे होंगे और वो पढ़ाई को अच्छा समझते होंगे तो वो भी पढ़ाई को ही अच्छा समझेगा और पढ़ने की तरफ ही ध्यान देगा। अगर उसके दोस्त मतलब क्रिमिनल माइंड के होंगे और वो एडिक्टेड होंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एडिक्शन की तरफ चला जाएगा। तो इन दोनों थ्योरीज की बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं
कि सोशलाइजेशन और क्राइम का आपस में गहरा ताल्लुक है। फ्रैंकटन कंडक्टेड अ स्टडी इन 1990 फोकसिंग अराउंड द पेरेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन आर प्राइमरी इन socialization. His study, known as the Cambridge Study in Delinquent Development, looked at the risk factor among 411 boys from London. His study shows that parental influence and a lack of care and control over their child were the main cause of the childhood delinquency. ये फ्रैंकटन ने रिसर्च की थी 1990 में और 411 लड़कों पर उसने रिसर्च की थी, और उसका जो रिसर्च का नतीजा था वो क्या था कि एक बच्चे में अगर बचपन में उसकी केयर नहीं की गई, उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो जब वो बड़ा होगा तो उसमें डेलिक्वेंसी होगी, मतलब वो उसका जो बिहेव होगा वो वायलेशन की तरफ जाएगा, वो ओबीडियंट नहीं होगा बल्कि वो डेलिक्वेंट होगा। मतलब क्या कि वो नॉर्म्स की वायलेशन करेगा, वो क्राइम करेगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। इन एडिशन द फैमिली सोशल क्लास बैकग्राउंड कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन आइडिया टू फंक्शन both primary and secondary socialization. The association that we have with others from our own social class affect how we behave. As white rights, the mixing of the others within your own social class produces behaviors associated with these. For example, the middle class families tend to be highly educated and have a sense of belonging through that particular social class. Whereas in contrast, working class families tend to be slightly more dysfunctional, often worried about money, and due to the nature of the mother's activities, her children develop through the influence of their peers. वो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी माओं के पास टाइम ही टाइम होता है, पैसे की कोई परेशानी नहीं होती, कमाना नहीं होता, इसलिए वो अपने बच्चे को बड़े अच्छे से सिखा पढ़ा सकती है। इसके बरक्स जो गरीब लोग होते हैं उसकी माँ को काम करना होता है, परेशानी होती है, तो उसके जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो सही नहीं होता, उसकी जो सोशलाइजेशन होती है वो खराब होती है। द इफेक्ट ऑफ द सोशल क्लास एजुकेशन लिंक्ड टू क्रिमिनलिटी। द एग्जाम्पल वर्क ऑफ द विल्स एक्सप्लेन दैट some working class jobs are stereotypes are of a dead end nature. They are often dull, profitless, uninspiring. In some circumstances, other classes such as the underclass may find it necessary to turn to the aspect of crime due to low pay that a job provides, or in some cases because they lack a job. वो कहते हैं कि जो निचले दर्जे की जॉब होती हैं जिनमें पे कम होती है, जिनमें प्रॉफिट नहीं होता, जिसमें इनकम नहीं होती, तो उसका क्या नतीजा होता है? उसका ये नतीजा होता है कि उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या हो जाता है, वो क्रिमिनल हो जाता है, वो बिल्कुल क्रिमिनल बिहेवियर के होते हैं। इस वजह से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इन दिस वे it is clear to see that the effect of socialization highly influence how a child will operate in the later life within a society. Both primary and secondary forms of socialization bring determinal effects. In terms of family and education, as Nepper states, there are, it might be said, three ways of thinking about the connection between education and crime: problem at school, problem around school, and problem with school. This suggests that through the family and education, a child can be highly influenced and therefore act upon the way they are treated and what they have observed. In terms of criminality and usefulness of the socialization, theories in some aspects they are indeed effective within the society today. Bondra's social learning theory can still be applied to behavioral issues within society. This means that authorities can intervene in both family and educational situations to prevent poor influence producing negative effects onto a child, and so that a child can become a functioning member of the society and reduce the criminality rates within civilization. वो इस पैराग्राफ में हमें सोशलाइजेशन और क्राइम का इंट्रैक्शन बताते हुए ये कहना चाह रहा है कि सोशलाइजेशन और क्राइम का आपस में गहरा ताल्लुक है, कि सोशलाइजेशन की बेसिस पर इंसान जब प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन सीखता है तो वो उसके साथ जो चीज़ें उसको मिल रही होती हैं वो भी सीखता है। अगर उसकी फैमिली नेगेटिव है, उनका क्रिमिनल बिहेवियर है, वो पुअर लोग हैं, तो वो क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अगर उसकी फैमिली अमीर कबीर है
और उसका ख्याल रखती है, उसको अच्छी तरबियत करती है, तो उसका बिहेवियर ठीक होगा। लेकिन अगर अमीर कबीर फैमिली है और बच्चे की सोशलाइजेशन का ध्यान नहीं करती, वो बुरे लोगों की कंपनी में चला जाता है, तो एंड रिजल्ट वही होगा। तो मुख्तसर जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसी आपकी कंपनी होगी, वैसा ही आपका बिहेवियर होगा और वैसे ही सोसाइटी में आप रह रहे होंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए और हमारी ला लेक्चर सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए।